honorable ministers, honorable MLAs, and my dear friends. Today is an auspicious day or moment in our life. Chandrayaan 3 is about to soft landing, kissing Dakshin fall of moon. And another aspect is also there. After a long interval time, our India is going to, our one Pragnananda is going to be in the top of Chess World Cup now going on. So, our proud moment is nearby. At the same time, our Rashtrapati ji is visiting. Yesterday in the public meeting I have stated, even Gandhiji will be happy to see our Rashtrapati ji, present Rashtrapati ji is holding this post. I am addressing the Goa Assembly. What is one of the specialities of Goa Assembly? Of course, we may not be think about it seriously. Our national thinking leaders comprehensively evaluated India and about social life, public life, financial life, political life. Gandhiji, Dr. Manohar Lohia, Pandit Deenadayal Upadhyaya, such a different school of thoughts are there. But if we go to this different, of course in a democracy right to differ is there. So different views may be there. But if we analyze these different views, we can see our national leaders having one opinion, that is through villages India will survive and India development will come into effect. I am stating this aspect now because, subject to correction, I am saying, according to my information, Goa is the ideal state wherein village supremacy in all fields we can see. This assembly is in a village. Our secretariat is in a village. Our university is in a village. Our Raj Bhavan is in a village. Our High Court is in a village. So, village is dominating in all the developmental and life of the Goan people. And I am a person from some other state. But I would like to say that people of Goa are good at their heart. That is why nobody can say any major religious rite in the history of the state. 16th century, of course, history shows something else. I am not going to that aspect. But even then, self-restraint is the base of our people. Our MLAs, representatives of people, you are the followers, representatives, reflects through the culture and tradition of India as well as peculiarities of Goa. I am requesting all politicians should be innovative as far as people are concerned and maintain a standard in their life as well as in their activities. And dedication, of course, we politicians, I am not a politician now, politicians are hard working, so dedication is there. So I appreciate in the parliamentary setup of our state, cordial relationship existing in political arena as well. I congratulate all of you.
And what is the need of the hour? According to me, we all know our democracy, 3 pillars are there. And it is a need of the hour. I'm not blaming anybody, executive, legislature, and judiciary. Of course, additionally, Supreme Court held that it is press also is having such an equal thing. But everybody should, every pillar should maintain, every wing should maintain its Lakshmana Rekha. I think a martyr, I'm not, as a governor, I am not saying anything more than that. We'll all think about, can any wing can violate the Lakshmana Rekha proposed by, through constitution placed by our forefathers. One thing, as a student of history and law, if you go through the Indian Constitution, our Constituent Assembly never anticipated an onslaught of one wing to other wing. Whether it is happening or not, it's a disputed aspect. I don't want to go to that. But our traditional India, we see, before that I would like to say, that is why in our Constitution, if a clear-cut violation is there, straightaway there is no remedy suggested in our Constitution. Because they never anticipated that. Cordial relationship. That is a history of our country also. Gita Sandesh, Swadharma Nidanam Shreyo, Paradharmo Bhayavaha. So, mutual cooperation, not conflict, is the theory of this country from time immemorial. Negative is not our approach in any field if we go through the history. Constructive approach. So, magnanimity, equilibrium in the society, responsibility and integrity we should maintain. Paraspara bhavayandashrayo paramavavastha. Help each other. Through that process, our country should develop. The slogan in our Gita. Rabindranath Tagore also in one of his important poems stated that, where is God? God is visible in breeze and not in tempest. Tempest can destroy everything. What production is there? The breeze is there. We can realize. We can enjoy. So that is why I'm not taking much of your time. Yesterday, our respected, beloved Governor President of India, Rashtrapati ji, complimented us on Goan people regarding its commitment to Article 44. I'm very happy that yesterday evening, it is publicly we got an opinion from highest post in India. Our Rashtrapati stated that the meaning is that Article 44 of the Constitution of India is not a dead letter. I'm not going to the details of that. But gender justice, the only state wherein in India, son and daughter, they are entitled for equal right in property if the father, parent expired. Even lawyers are also here as MLAs. So, in other states, I'm not mentioning any community's name or anybody. Only daughter is entitled for 1/3 of the property of the father or parents. 2/3 to male.
And where is the gender justice? The provision article in our constitution, what does it mean? I am not going to that aspect at all. Discrimination based on sex. Our Constituent Assembly discussion, if we go through on this particular aspect, at that time it was Article 34, now it is 44. 3 days continuous discussion. Dr. Ambedkar, Alladi Krishnaswamy Iyer, and discussion there, how different two views of motions are dismissed by the Constituent Assembly. These are things to be looked into by us. So I am not going much on that. Onslaught on executive, judiciary and legislature. Recently one legislative assembly unanimously passed a resolution. Of course they can express the opinion. Everybody has got the right to express opinion on that particular subject, any provision in the Constitution, including Article 44. I am not against that. But an assembly, can they pass a resolution not to implement it? Such an extent our legislature is going exceptionally. I am not mentioning the name. If I mention, that shame will come to me also. I am from that state. So these types of things, onslaught, it is not allowed. And we would like to say, my time is over. I'm not going to the details, but our Constituent Assembly discussions as a whole, we will look into it. Interpretation of Constitution also. The world famous Constitution expert, founding fathers, one of the founding fathers of American Constitution, Alexander Hamilton, he interpretation of the Constitution, all the three wings has got right. If only a dispute is there, then only the highest court of India get jurisdiction and little bit redress that their view may be there. Under Article 141 of the Constitution, it is applicable. So, interpretation, each organ has got its own power. I am requesting all of you study files, and regarding so many things, we will have to look into that. You are vested with the power, whether you are doing it or not. I am not evaluating the situation. And further, one more thing in my appreciation as a law student, that three aspects are there in set asiding a legislation. One is competency, whether it is violative of fundamental rights and violative of any provisions of Constitution. So many certain acts passed by this legislative assembly were set aside. During the last 10 years, I look into that aspect. I'm saying we will have to focus more and more. We are the representatives of the people. We are empowered with the power. And look into that and study. I have taken 3 more minutes more. Pardon me for that. In the presence of Rashtrapati, I ought not to have taken much time now. 3 minutes more I have taken. I wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Honorable Governor, sir. I now kindly request the Honorable President of India to address the House from the podium to the right. गोवा के राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्ले जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमेश तवड़कर जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जोशुआ डिसोजा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यूरी ओलेमाओ जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार।
आज मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सभी के गणमान्य सदस्यों के बीच उपस्थित होकर बहुत आनंद महसूस हो रही है। आप सभी को इस महत्वपूर्ण संस्था का सदस्य होने की हार्दिक बधाई। आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं, इस विधानसभा के, जो भिन्न भिन्न धर्म, आस्था और पंथ को मानते हुए भी एक गोवा और एक भारत में विश्वास रखते हैं। भारत के साथ अभिन्नता का ये विश्वास गोवा वासियों में सदैव विद्यमान रहा है। भारत की आज़ादी भी गोवा की मुक्ति के बिना अधूरी थी। इसी भावना से ओतप्रोत होकर देश भर के लोग ने गोवा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। गोवा के क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन के दौरान त्रिरंगा और जय हिंद का वो प्रयोग भी इस बात का प्रमाण था कि विदेशी शासन से मुक्त होकर गोवा के लोग भारत के साथ एकत्रित होना चाह रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी सिंधु देशपांडे के शब्दों में गोवा इज जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज नॉट कंप्लीट टिल गोवा इज लिबरेटेड। गोवा में राष्ट्रवाद के जनक डॉक्टर टी.बी. कुन्हा से लेकर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, मोहन रानाडे और पुरुषोत्तम काकोडरकर जैसे गोवा मुक्ति संघर्षों में भाग लेने वाले सभी सेनानियों की राष्ट्रभक्ति अप्रमित है। मैं आज उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ। आपको उन आदर्शों पर चलना है जिसके लिए उन्होंने त्याग और बलिदान किया था। 1960 के दशक में विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद गठित हुई गोवा विधानसभा के आगामी जनवरी में 60 वर्ष पूरी हो जाएगी। वर्ष 1987 में गोवा की पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। आरंभ से ही इस विधानसभा में वाद विवाद संवाद की सुस्त परंपरा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा विधानसभा के सदस्यगण गोवा के निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उन्हें कार्यरत देने के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। इस सदन में आने पर आज के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्मरण स्वतः हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश और राज्य की असाधारण सेवा की है। उनका सरल व्यक्तित्व और जुझारूपन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं उनकी और इस विधानसभा के उन सभी हस्तियों की स्मृति को नमन करती हूँ जिनके योगदान के बल पर गोवा आज इस मुकाम पर पहुँचा है। माननीय सदस्यगण, गोवा पर्यटन के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। गोवा की मल्टीकल्चरल, मल्टीफेथ सोसाइटी सभी को आकर्षित करती है। यहाँ पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स और यहाँ के क्यूसिन्स विश्व भर में विख्यात है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गोवा खनिज संसाधनों से भी संपन्न है। यहाँ लोहा, मैग्नीशियम, मंगानीज, बॉक्साइट जैसे खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तटीय राज्य होने के कारण इनका निर्यात भी सुगम है। यही कारण है कि पर्यटन के आय का प्रमुख साधन बनने से पहले खनन ही इस राज्य के राजस्व का अहम स्रोत था। आज माइनिंग के क्षेत्र में भी पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों आयामों में समान रूप से
ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि गोवा फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी सहित नॉलेज बेस्ड उद्योगों का बढ़ावा दे रहा है। उच्च साक्षरता दर और करीब 67% वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते गोवा इन उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान है। मुझे ये बताया गया है कि गोवा भारत का चौथा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है और देश के कुल फार्मा एक्सपोर्ट में लगभग 10% का योगदान देता है। ये उपलब्धि सराहनीय है, प्रशंसनीय है। माननीय सदस्यगण, ये बहुत ही संतोष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ये राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज विकास के अनेक मानकों पर गोवा अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। वाटर मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट, प्रिपेयर्डनेस, इनोवेशन, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मानकों पर गोवा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत है वो है सार्वजनिक जीवन में और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। मैं देख सकती हूँ कि इस सदन में बहनों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। मुझे बताया गया है कि गोवा में कामकाजी महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। ये गोवा जैसी उदारवादी समाज के लिए उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलने की दिशा में आप सबको प्रयास करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, संसद और राज्य विधानमंडल वे पवित्र संस्थान है जो लोगों की सॉवरेनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषय पर चर्चा करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए सदन में सदस्यों की आर्थिक और प्रभावी भागीदारी महत्वपूर्ण है। मुझे ज्ञात हुआ है कि पिछले कई वर्षों से इस सदन की कार्यवाही का विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जाता है। इस प्रसारण के द्वारा आम लोग देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि सदन में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं और उनके हित में जुड़े मुद्दे पर कैसे उठा रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग लोगों के साथ आपके संबंधों को सुदृढ़ करता है, लेकिन आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डालता है। सदन में आपका व्यवहार सभ्य हो, इसकी अपेक्षा की जाती है। ये हर्ष और संतोष का विषय है कि गोवा विधानसभा के सदस्यों ने सदन में हमेशा सद्भाव के वातावरण में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं की भावना के साथ कार्य किया जाता है। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2047 तक हमें एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जो अपने गौरवशाली अतीत को आत्मसात किए हुए आधुनिकता के हर सुनहरे पहलू को समाहित करेंगे। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो और साथ ही अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने की सक्षम भी हो। एक ऐसा भारत जिसका युवा और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने में सबसे आगे रहे। एक ऐसा भारत जिसकी विविधता और भी जीवंत हो और जिसकी एकता और भी अटूट हो। आज भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ भारत G20 देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। हमारे सामने भारत की क्षमता और संस्कृति को प्रदर्शित करने का उचित अवसर है। हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना है। माननीय सदस्यगण, देश के इतिहास के
इस महत्वपूर्ण कालखंड में आपका ये प्रयास होना चाहिए कि गोवा एक ऐसा विकास का मॉडल स्थापित करे जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो। ये देश के लिए इस अमृत काल में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करके तटीय सीमा का लाभ उठाते हुए शिक्षित, जागरूक और कर्मठ गोवावासियों के बल पर ये लक्ष्य अवश्य हासिल करेगा। मैं सभी गोवावासियों की उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस विधानसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। Thank you, Honorable President of India. We shall now all rise for the national anthem. Honorable members, please remain standing as the honorable dignitaries take the leave of the House. The honorable dignitaries that form the reception procession may similarly see off the honorable guest as they take the leave of the House.